Good evening, students. Harisharanam in the style of Gurukul. Today, we are going to have live class, not about poem, not about anything else, but it is about grammar. आप में से बहुत सारे बच्चे शायद डिफरेंस लैंग्वेज और लिटरेचर का नहीं समझते होंगे. What is the difference between language and literature? जानिए इस चीज को. Because grammar is a part of language. और लैंग्वेज और लिटरेचर में अंतर क्या होता है ये जानिए आप कि लिटरेचर इज द सेकंड स्टेप ऑफ लैंग्वेज. पहले हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं और फिर उस लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ते हैं, है ना. आप लोग भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने जन्म लिया आपने कहानियां अपनी कविताएं उपन्यास या नाटक पढ़ना शुरू किया, पहले आपने अल्फाबेट्स पढ़ा होगा किसी भी लैंग्वेज का और फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखा होगा और तब आप कहानियां कविताएं नाटक और उपन्यास पढ़े होंगे. आज जो लाइव क्लास होने जा रहा है इसमें इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के बारे में हम सवाल करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं अगर आप ये नहीं ठीक से जानते हो then you won't be able to understand further chapters like time and tense, voice, narration, transformation of sentences, other etc etc etc. So in this test you will be asked basic questions which has been taught in your class. Let us see how many of you answer my questions. यहां पे हम लोग, क्या नाम है भाई आपका, कुंदन. कुंदन के साथ हम लोग खेलने जा रहे हैं इस गेम को और इस गेम के थ्रू आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. आप भी खेलिए घर बैठे और टेस्ट योरसेल्फ. जांचिए अपने आप को कि आपकी जानकारी बेसिक इंग्लिश में बेसिक ग्रामर में कितनी है. ठीक है, तो शुरू करें ये खेल और इसको एकदम इंटरेस्ट के साथ पूरे एकदम ज़ील के साथ आप लोग खेलिएगा. सोच समझकर टाइम मिलेगा आपको आंसर देने का और सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का टेस्ट जो कि इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स पे बेस्ड है. आइए कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 1. He is very intelligent. The underlined word, it means very, in the sentence is option A, a conjunction, option B, an adverb, option C, a preposition, and option D, an adjective. बताइए कुंदन. What is this? आपने B आंसर बताया है. आइए देखते हैं ये सही है या नहीं. Let us see. Yes, कुंदन ने बिल्कुल सही बताया. It is an example of adverb in this sentence because in this sentence intelligent is adjective which is qualifying pronoun he, and the word very is qualifying intelligent, that is adjective, and we all know that the word which qualifies an adjective is none other than adverb. Very good. के बेटा बहुत बढ़िया पहला आंसर दिया है आपने और उम्मीद करता हूं आगे भी आप अच्छा आंसर देंगे. कॉम्पिटर जी दूसरा क्वेश्चन लाइए. Fish is very tasty. In this sentence the word fish is a proper noun, A, B, a common noun, C, a material noun, and D, a collective noun. कुंदन ने B, एक कॉमन नाउन पे अपना दाव खेला है.
आइए देखते हैं ये सही है या नहीं। आंसर बताइए कॉमेडी जी। सॉरी कुंदन, आपने दूसरे क्वेश्चन में गलती कर दी। यस, ये बात सही है कि फिश जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन इस एग्जाम्पल में फिश जो है वो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की परिभाषा शायद आपने पढ़ी होगी कि जिस वस्तु को हम लोग अपने उपभोग में लाते हैं, है ना। Fish is in water. In this sentence, fish is a common noun. But when we say fish is very tasty, यहाँ पे ये फिश जो है वो बाजार से आकर पीस होकर, है ना, फ्राई होकर ग्रेवी लगकर आपके प्लेट में आ गया है और आप उसका स्वाद ले रहे हो, यानी उसका उपभोग कर रहे हो। और जब उपभोग कर रहे हो आप उसको, then it is not a common noun, it is material noun. Sorry Kundan, you will have to go. It's all right. Better luck next time. Next participant, please come. What's your name? आदित्य। आइए, दूसरे क्वेश्चन में गलती की कुंदन ने और उन्हें जाना पड़ा। अब एक नए पार्टिसिपेंट आए हैं और उनका नाम है आदित्य। इनके साथ खेलेंगे आगे का खेल। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। The word teacher is an example of A. masculine gender, B. feminine gender, C. common gender, and D. neuter gender. Please, Aditya, answer दीजिए। आदित्य ने C. common gender पे टिक लगाया है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कॉमेडी जी, आंसर बताइए। Teacher is an example of common gender. A teacher can be a male, a teacher can also be a female. ठीक है ना? This is a teacher, student, doctor. All these are examples of common gender. बिल्कुल सही आपने खेला। Question number 4 now. Plural form of the singular word mother-in-law will be A. mothers-in-law, B. mother-in-law, C. mother-in-laws, and D. none of the above. आदित्य ने A को बनाया है अपना आंसर। It means mothers-in-law. Let us see whether it is correct or not. Yes, it is correct. Can you explain it? कैसे, क्या रूल है? What's the rule? Where? कहाँ ऐसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। जानना पड़ेगा ना। आपने सही आंसर दिया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। It is a compound singular noun, and the rule says that we make a compound singular noun plural by putting s or es to the end of the principal word, right? प्रधान शब्द के अंत में s अथवा es लगाकर हम बनाते हैं क्या? plural. Mother-in-law, it means what? सासू माँ को कहते हैं। ठीक है, भले ही वो सासू माँ है, लेकिन है तो माँ ही, है ना। और इसलिए हम प्रिंसिपल वर्ड क्या है? मदर है। तो यहाँ पे हम लोग इन या लॉज में नहीं लगाएंगे आप, है ना, यहाँ पे मदर में लगाएंगे। सो द राइट आंसर विल बी मदर्स इन लॉ। आपने सही चुना है, लेकिन एक्सप्लेन करने की भी क्षमता रखो। देखो, सबसे जरूरी है कि सपोज करो यू नो द आंसर। मान लो आपका कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है और वो आपसे पूछे, भैया आपने कर तो दिया लेकिन कैसे किया, नहीं समझ में आया, तो यू एक्सप्लेन ना। और जब आप एक्सप्लेन कर पाओगे उसको, then he or she will be satisfied, right? Yes, moving forward now.
to question number 5, please. Question number 5 on computer screen. Ram presented Mohan a pen. Here the word Mohan has been underlined. The underlined noun in the sentence is N. A, nominative case. B, accusative case. C, dative case. D, vocative case. आपने एक्यूजेटिव केस पर दांव खेला है? देखते हैं ये सही है या नहीं। Sorry, my dear friend, आपने गलती कर दी। Mohan is not in accusative case. It is an example of dative case. It is indirect object here. It is not a direct object. And when the noun is in the form of indirect object, it is in dative case, not an accusative case. Sorry, लेकिन चलो थोड़ी देर तक हम लोग साथ चले, लेकिन आपने गलती की और रूल कहता है इस गेम का कि आपको जाना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, बड़ा लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आइए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है गौतम, और गौतम के साथ हम लोग खेल को आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन कंप्यूटर स्क्रीन प्लीज। Question number 6. The word which qualifies a noun or a pronoun is called A, a pronoun, B, an adjective, C, an adverb, D, a preposition. गौतम ने एडजेक्टिव पे अपना दांव खेला है, देखते हैं सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएंगे। The word which qualifies a noun or a pronoun is called, देखता हूं, yes, it is an adjective. हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। The word which qualifies a noun or a pronoun is called an adjective. Absolutely right. It was a very simple question. कोई बात नहीं, आगे थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे, सिंपल भी आएंगे। इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल दीस थिंग्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कॉमेडी जी। Ram killed a tiger. This is a sentence. In this sentence, killed is A, primary auxiliary verb, B, a transitive verb, C, an intransitive verb, and D, a modal auxiliary verb. गौतम ने ट्रांजिटिव वर्ब पे अपना दांव खेला है। Let us see whether it is correct or not. Yes, it is a transitive verb. Can you explain? Can you define transitive verb? नहीं, फिर कैसे आपने बता दिया? तो कवर है। हाँ, जानना चाहिए। देखो, जब तक आप डीप डेफिनेशन नहीं जानोगे तो कैसे बता पाओगे ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। Here the action doesn't stop with the agent but passes to something else. In other words, we can say that transitive verb is that verb which takes an object. है ना? यहां पे क्या होता है, क्रिया जो होती है वो काम करने वाले के साथ, सब्जेक्ट के साथ, एजेंट के साथ रुकती नहीं, आगे बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर ऑब्जेक्ट ना डालो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगता है। जैसे देखो, राम किल्ड अ टाइगर, अगर ए टाइगर नहीं आता यहाँ पे, राम किल्ड, देन अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट डिड राम किल। राम ने मारा, तुरंत सवाल आता है ना, राम ने क्या मारा भाई। और जब ऑब्जेक्ट आ जाता है
तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. So transitive verb always takes an object, and if the object is not put there, sentence seems to be incomplete. And here there is an object, a tiger, and that's why answer is, no doubt your answer is correct, and the answer is transitive verb. Killed is an example of transitive verb. Right? आगे बढ़े हम लोग. Yes. Question number 8 now on your computer screen. This is your pen. In this sentence, your is demonstrative adjective, A, B, proper adjective, C, distributive adjective, D, possessive adjective. What is your answer? आप कहते हो कि ये demonstrative adjective है. आइए देखते हैं. कंप्यूटर जी बताएंगे. सॉरी गौतम, आपने गलती कर दी. It is an example of possessive adjective. Possessive adjective क्या होता है? It shows possession or ownership. This is your pen. यह तुम्हारी कलम है. यानी इस कलम का ओनर, इस कलम का मालिक कौन है? तुम हो. स्वामित्व को दिखा रहा है, ओनरशिप को दिखा रहा है, possession को दिखा रहा है. That's why it is an example of possessive adjective, not demonstrative adjective. Sorry, you committed mistake, and you will have to go. Okay. चले कुंदन चल. आइए एक बार फिर से हम लोग कुंदन जी के साथ ही खेलते हैं. इस खेल को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है? Question number 9 on your computer screen. Stars twinkle. Here twinkle is a transitive verb, an intransitive verb, an auxiliary verb, none of them. क्वेश्चन समझ रहे हो आप? सेंटेंस है आपका स्टार्स ट्विंकल. इसमें ट्विंकल कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है या इनमें से कोई? आपने ट्रांजिटिव वर्ब पे टिक लगाया है. देखते हैं. एक चीज जान लो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर सही नहीं होगा. Come with full preparation. मैंने क्या रखा था कि बेसिक्स जितना भी क्लास में बताया गया है जरूर बताया गया होगा. मैंने बताया होगा या किसी ने भी बताया होगा. समझ रहे हैं? पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होगा. इंट्रांजिटिव वर्ब है. क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में? Here the action stops with the agent and doesn't pass to anything else. In other words, we can say that intransitive verb is that verb which does not take an object. Transitive verb का just reverse है. Transitive verb लेता है, intransitive verb नहीं लेता है. देखो यहाँ पे stars twinkle, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. तारे टिमटिमाते हैं. क्या आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत है? अपने आप में ये कंप्लीट लग रहा है ना? तो आपने गलत किया और फिर से आपको जाना पड़ेगा. आइए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर, आइए आदित्य फिर से आपके साथ खेलते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 10 ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. Honesty is an example of A proper noun, B a common noun, C an abstract noun, and D a collective noun. आपने फटाफट जवाब दिया है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आपने टिक लगाया. देखिए ये सही है या नहीं? Yes, it is an example of abstract noun.
समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्या होता है? It shows quality, state or action. It is generally felt and it is made by an adjective, a common noun or a verb. आप बता सकते हो यहाँ पे honesty जो बना है वो adjective से बना है या common noun से बना है या verb से बना है? He is honest. इसमें honest adjective है. ईमानदार से ईमानदारी, तो बिल्कुल सही आपने टिक लगाया है. Honesty is an example of abstract noun. Good. आगे भी बहुत ध्यान से खेलिएगा. Yes, question number 11 now on your computer screen. Plural form of the word lady will be A. Ladies, L-A-D-I-E-S. B. Ladies, L-A-D-I-S. C. Ladies, L-A-D-Y-S. And D. None of the above. आपने L-A-D-I-E-S को सही माना है. Let us see whether it is correct or not. Yes, it was a very simple question. Can you explain it? यहाँ पे वर्ड को रिप्लेस करके IES लगा. क्यों लगाया? केवल एस क्यों नहीं लगा दिया? रूल जानना चाहिए ना. स्पष्ट रूल कहता है, क्या कहता है कि if a singular noun ends in y and just before y we have a consonant letter, not a vowel letter. In such condition we make it plural by changing y into IES. यही अगर vowel रहता तो हम लोग केवल s लगाते, जैसे boys, boys से boys. इसमें क्या y के पहले o है जो vowel letter है. तो आप एक्सप्लेन करने की भी क्षमता रखो, रूल जानोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस अलग से आता है. और इसीलिए हम डिटेल फाउंडेशन दिखाते हैं, डिटेल बेसिक्स बताते हैं. चल ठीक है, लेकिन आपने आंसर सही दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. दिनेश, कम हियर. इन दिस सेंटेंस दिनेश इज इन A. Subjective case, B. Accusative case, C. Dative case, and D. Vocative case. Dinesh, come here. इस सेंटेंस में दिनेश कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में है या एक्यूजेटिव केस में है या डेटिव केस में है या वोकेटिव केस में है? आपने सब्जेक्टिव केस में टिक लगाया है. देखते हैं सही है या नहीं. आपने फिर गलती की. ये वोकेटिव केस में है. Here it is case of address. लाइफ में भी इल लग रहा है. अब जाकर डी जा रहा है, लेकिन जानना पड़ेगा सही ये क्या है. इट इज केस ऑफ एड्रेस. दिनेश, यहां संबोधन किया जा रहा है. एंड व्हेन a noun is used for the sake of address, it is not in subjective case, it is rather in vocative case. बेसिक्स जानोगे नहीं, आगे के चैप्टर्स समझने में दिक्कत होगी. मैं स्पष्ट कह दूं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको नरेशन, तो उसमें आपको बताएंगे कि if we have a noun of vocative case in the reported speech of the direct speech, in indirect speech it becomes object of the reporting clause. But if you don't know what is vocative case, how can you just identify it? How can you just make a indirect speech of it? That's why, my dear friend, basics clear करो. मैं तो इसको इस तरह से कहता हूं, क्रिकेट के भाषा में मैं समझाता हूं इस चीज को. बड़े बड़े प्लेयर्स का जब फॉर्म खराब होने लगता है ना, मुझे याद आ रहा है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें राहुल द्रविड़ ने कहा था कि जब एक समय मेरा फॉर्म बहुत खराब होने लगा, मैं फ्लॉप करने लगा, तो मैंने अपने सीनियर्स को कंसल्ट किया. तो हमारे सीनियर ने क्या कहा कि गो टू द बेसिक्स. एकदम जो शुरुआत होता है
क्रिकेट का बेसिक्स क्या है? बल्ले को एकदम सीधे लाओ। उसी तरह ये बेसिक्स जो है, ये अगर आप नहीं जानोगे, you won't be able to understand further chapters. So my dear friends, थोड़ा जानना पड़ेगा। आपने गलती की, you have to go. Next part is the bet. कुंदन को भेज देना। आइए, उम्मीद करता हूं आप लोग भी घर बैठे मजा ले रहे होंगे इस खेल का, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टेस्ट खासा इंटरेस्टिंग है। जज करो अपने आप को। मैंने कहा भी है कि आप भी खेलो घर, और कितना स्कोर किया है आपने ये जरूर भेजने की कोशिश कीजिए। अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर भेजिए, और कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखिए, अगर कुछ आपको लग रहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो वो भी लिखिए। हम लोग उस पर आगे काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। I know where he lives. This is the sentence. In this sentence, where is an example of? A. Simple adverb. B. Relative or conjunctive adverb. C. Interrogative adverb. D. None of that. मैंने कहा है इस सेंटेंस क्वेश्चन सोचिए, और जब कहते हैं ही विल कम विदिन ए मंथ, तो वो होल पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। वो 20वें दिन भी आ सकता, और जब का टेस्ट को दीजिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले दिन, दूसरे दिन। पहले से बता दिया जाएगा आपको कौन सा डे। किसी अच्छे टेस्ट की फिर तैयारी करते हैं और देते हैं। थैंक यू। आज तो सब हिल गया सर, एकदम हिल गया। हमारा लगता था ये लड़का अच्छा खेलेगा, तो हमको भी याद इस बार ये भी बहुत कम है नहीं? इस बार आपका 2 फर्स्ट वाला